My dear aspirants, I hope you are doing all right. Welcome to the another session of the crash course which we are undertaking at Tutorial. The objective is very simple and very clear. The objective is to cover most important topics wherein the most of the questions are seen from the subjects of economy in regards to me, while other teachers are also undertaking different subjects and doing the same thing, undertaking the most important topics in least time possible in a very crisp and clear manner. I hope you are enjoying the journey with me. Let's continue today with another important topic, that is census. Census had been a very crucial topic for UPSC. The questions seen in census had been very simple, at the same time very concentrated from a very specific set of facts. So today I will be giving you an idea, the background of census and all the important facts. So before starting, let me tell you about what APJ Abdul, our former Prime President, Dr. APJ Abdul Kalam has said. He has very well said, your thoughts convert into reality. So the idea is, my friends, while you are thinking about anything, if you think positive and if you can force your mind to think in a particular positive direction, your journey to success is ensured. You think, if you self doubt yourself, then there is a good chance that you may not go into the direction which you want. Have faith in yourself, have faith in the people who are assisting you, like we are doing at Tutorial, and do your hard work. Don't self doubt your capabilities. So let's start with the topic of census. My dear aspirants, census was last conducted in 2011, and the census which is conducted earlier is very important. Like, let's say if it had been year 2010, we would have studied the census before that. So today we'll be studying about the census which was last conducted, that is in 2011. So let's have basics of census. What is census? It is process of gathering, compiling, analyzing, evaluating, publishing, disseminating population statistical data. So the idea is, let's say I am the official responsible for certain region. So I'll be gathering the data. I'll compile in a said form. So if you see somebody comes to your house for census, he must be having a specific format. So he would compile that data in the specific format. That data would be further analyzed by the senior officials, right? And that evaluated data would be published and disseminated in regards to the population. The data is about population, so all these things would be done. What is the idea? Idea is to understand the demographics of the country, that how many people are there in the country, what are their ages, in what age group we have maximum number of people, how many old people are there, senior citizens are there, right? Socio-economic data. Let's say there are, that there are certain communities in our country which are marginalized. So what is the status of those marginalized communities? Fine. What is the status of other communities? What are the socio-economic connection between them? So let's say somebody is socially not very uplifted. So those people who are marginalized, what is their economic status? That's all. That all we study in census. It provides us. It is provided on the basis of a specific data. If we see history of census, you see our Indian civilization, we know that it goes back to 3000 BC, right? So if you see whatever you study, you will find that nothing is new to our civilization. Somehow it comes back to India, westernized in different form, but it has already happened in India. For example, census was already conducted in Mauryan dynasty period, right? Systematized in 1865 to 1872. See, this period is basically the rule of British. British had already come to India by this time. And you must be knowing about Lord Mayo. In his period, census was conducted and basically systematized in our country. So there could be a question,
who started census in our country in a modern systematized form. So that would be Lord Mayo. Lord Mayo had already started the procedure. Census were already conducted in this year, but a full scale, proper, trustworthy resource information is 1881 census. So since then, the census has been continuously undertaken by the government of India and the predecessing governments. So you know that we are by the rule of British before 1947. So that was the case. So let's move ahead further. भाई क्वेश्चन उठता है कि क्यों सेंसस इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में. सो देयर आर सिंपल रीजंस क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक्स को समझने के लिए. जस्ट वन मोमेंट. डेमोग्राफिक्स को समझने के लिए, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, जैसे मैंने बताया ना, कितने लोग क्या एज ग्रुप में फॉल करते हैं, राइट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन. फॉर एग्जांपल, कितने लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट. लिटरेसी रेट्स क्या है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एम्यूनिटीज क्या है. जैसे इफ यू सी, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड दे आर अंडरटेकिंग डिफरेंट schemes whose these schemes are focused at providing housing facilities to the people of India, right? So if the idea is to provide housing facilities, how would a government know that जो हमने पिछले 10 सालों में किया है वो कहाँ पहुंचा है? Did people have actually received the benefit of it? So census इसमें भी हेल्प करता है. जो भी स्कीम्स आप इंप्लीमेंट करते हो, हमने पढ़ा ना इकोनॉमिक्स. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Economics is basically social science wherein you study, analyze, predict supply, consumption, production, distribution, right? And that is also correct in regards to government. So जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही है, सर्विसेज दे रही है, क्या वो पहुंच रही है लोगों के पास और कितनी एफिशिएंटली पहुंच रही है और क्या उसका इम्पैक्ट आया. सो दैट इज ऑल्सो स्टडीड. अर्बनाइजेशन कितना है भाई, कौन सा स्टेट कितना अर्बनाइज्ड है, किस रीजन में आपको ज्यादा अर्बनाइजेशन मिलता है, किस रीजन में आपको कम और अर्बनाइजेशन मिलता है. जैसे अगर मान लो किसी इस रीजन में अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा है, जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर वाला जो रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें देर इज वेरी हाई अर्बनाइजेशन. सो तो क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे जो स्कीम्स होना चाहिए, वहां पे जो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट और जो स्कीम्स वहां पर लेके आती है, उसका आइडिया शुड बी फोकसिंग ऑन द पीपल ऑफ द अर्बन एरिया, द अर्बन पुअर्स, द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड इन द अर्बन एरियाज, राइट. वहां पे मनरेगा में ज्यादा इन्वेस्ट करके अगर गवर्नमेंट वहां पे मनरेगा पे ज्यादा फोकस करी, तो डू यू थिंक देयर वुड बी मोर बेनिफिट rather than comparing it with scheme which involves providing employment to the people of urban area, right? Let's continue. Fertility rates क्या है? Let's say fertility rate क्या है, मतलब एक women कितने बच्चों को ऑन एवरेज बर्थ दे रही है, राइट. कम है, ज्यादा है, राइट. शेड्यूल्ड कास्ट कितने रीजन में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी है, लैंग्वेजेस कितनी बोली जाती है, रिलीजन क्या है, माइग्रेशन, हैंडीकैप्ड पीपल कितने हैं, और अदर सोशो इकोनॉमिक कल्चरल एंड डेमोग्राफिक डाटा इज करेक्ट. सी, it was 15th national census which was conducted in 2000. You must be knowing that census was to be undertaken in 2021, but because of COVID and other reasons, government couldn't undertake the census. So probably we can expect that after this general elections we can see census. So let's continue further. Census is basis for reviewing the progress. Obviously, as I said earlier, let's say I have been into government for certain amount of time, or in general I want to analyze the previous year, previous decades growth in regards to housing. So I'll look into the census and I'll get a clear picture कि उसके पहले क्या स्टेटस था, अब क्या स्टेटस है. So let's continue further. Facts about census. So my dear aspirants, the idea today is that facts are very important for this chapter. So we'll try to remember the facts as effectively we can. Fine. Starting with census कितने सालों में कंडक्ट किया जाता है? Every 10 years. Fine.
सेंसस 2011 का डाटा कब रिलीज हुआ था? मार्च 2011. सो जनरली इस पीरियड के आसपास डाटा रिलीज हो जाता है, राइट? नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यूनियन होम सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. सी, द आइडिया इज, ये जो ऑफिसर है या ये जो ब्यूरोक्रेट है, he is the key player in regards to census in our country. Union Home Secretary and रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. सो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री अंडरटेक करती है, तो मिनिस्ट्री इज होम मिनिस्ट्री. यू नो मोटा भाई, दैट मिनिस्ट्री. Census 2011 was 15 census as we have previously already discussed. 7th census after independence. Makes sense, right? Every 10 years, 70 years, it's approximately 70 years since our independence. That's why. Motto of the census, our future, right? So if you have a better census, a very analyzed, a very detailed census, which reaches out to all Indian citizens, leaving behind nobody, then you have a better future, better analysis, right? If you see, then 2011 census's registrar general and census commissioner, who was he? So he was C. Chandramouli. Fine. But who is currently the registrar general and census commissioner? Shri Mrityunjay Kumar Narayan. Fine. Total population had been 1.21 billion. Now you must have heard the news from United Nations that we have reached 1.40 billion mark. So we are the most populated country now. Ask yourself, is it something which is advantageous to our country or detrimental to our country's growth? Think about it. You may write the answers in the comments. Let's move ahead further. India second rank, that India had second rank then, right? It was followed by China. Now you know the case. The case is different. So what was the decadal growth? What is decadal growth? How much the population increases after every 10 years. Moving ahead further, increase in the population during 2001 to 2000. See the big number, right? 181 million. This much CR. Okay. So starting with, going ahead further, this much, इतना तो increase ही हो गई population. That is too much. Census 2011 was held in two phases. Housing, house listing and housing census. इस census में क्या हुआ था? जो भी officials थे, they undertook the census of all the buildings, whether residential, non-residential, सारी buildings का data they had noted down, their specifications की क्या capacity है क्या है, so that, see, अभी 2011 से 2024 आ गया अब तो, right? You would have observed that government focuses a lot upon infrastructure. क्यों? See, अगर infrastructure is good, then there is a good chance that country would see development. Why? See, if you provide basic good infrastructure, for example, if you are able to provide roads, transportation, electricity, waterways, water, and other these facilities are good electricity, then you can see a lot of investment coming into your country. Moreover, if you have good infrastructural development happening in your country, there is very high employment. जब जैसे for example, there was a case in USA. USA saw a huge recession once. So then President of USA decided to invest a lot in infrastructure. So he constructed a lot of sports stadiums and everything. उससे क्या हुआ, लोगों के पास जॉब आ गई. The market started seeing, observing growth again. So infrastructure is very important, and the government had conducted a separate, see, it was divided into two parts. So one was house listing and housing census, another was our general normal census wherein the population of the country was studied. Population enumeration. Enumeration is when you note down everything, whatever the data you want to collect. Let's move ahead further. Number of administrative units, 35 states and union territory. Can you tell me what is the current number?
The current number is 28 plus 8. 28 are states and 8 are union territories. Okay, so let's move ahead further. Districts 640, then sub-districts 5,924, towns 7,936, villages 6.41 lakhs. See, can you expect this data to be coming in your examination? No. But should you have a rough understanding of these data? For example, now when I read it, I have to keep in mind that India में जो districts है, there are around 600 plus. Okay. अगर villages की थोड़ा दिमाग में रखना चाहे तो 6.5 lakh के आसपास, right? So it would help you in your, let's say for example, if you are going to SSB, it would help you there. See, if you have a rough understanding about your own country, then you are able to make better calls, you are able to relate with the current information better. So have a rough understanding and let's move ahead further. See, you must be seeing a lot of red dots. So don't think that the file is having a lot of typos. No, they are not typos. Obviously, they are names, right? Nouns. So once the nouns are there, the files are not being able to understood properly. Hence, Thane district of Maharashtra is the most populated district of India. Why? Can you guess why? Right? It's very urbanized. So once a district is very urbanized, people live in houses which are very close to each other. They live in multi-story buildings. So once you live in multi-story buildings, एक जगह पे काफी लोग रहने लगे ना. So once you live very close in multi-story buildings, in very close localities, then obviously your district becomes very populated because ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह सकते हैं. And obviously there are economic benefits. Economy drives people, right? Why? See, Thane is very close to, basically it's part of Mumbai itself. So it provides a lot of employment opportunities, right? Business opportunity to people. So hence a lot of people live there. Dibang Valley, Arunachal Pradesh is the least populated. See, याद रखना आपको it's very important, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, it is the least populated district. वहां पे सबसे कम लोग रहते हैं. क्यों? Why? Can you guess the reason? The answer lies in geography and the economics. Geography, it is very isolated. Sorry, economics and geography help you to understand. It helps you to understand. See, when we study the geography, we realize that it is very isolated. Nobody lives there. It's very, and the economics is such that the resources are not available. Once the resources are not available, why would people live there? Right? So people want to have some resources easily available to them, and the place doesn't have much, so the density is less. Kurung Kume of Arunachal Pradesh registered the highest population growth rate of 111%. See, so Kurum Kume of Arunachal Pradesh. So what is about? About this, what happened is that the connectivity was very bad. Resources were decent, but the connectivity was very bad. Opportunities were very low. So once the government started providing basic facilities, so a lot of people migrated to that place. A lot of population growth was also observed, resulted into the highest growth. Okay, population growth. Longlang district of Nagaland registered negative population growth rate, right? 0.5 negative population growth rate. See, you must remember this, huh? It's important. Longlang, okay? Longlang in Nagaland. See, so people realized because of the natural difficulties, because of the climate change and other reasons, the resources are depleting, and the incentives of living there are decreasing day by day. So people started moving out of it. So the population growth started coming down, and later was observed to be going negative. Mahe district of Pondicherry has the highest sex ratio. 1176 females over 1000 males. So remember this, okay? Mahe district of Pondicherry. Can you tell me which of the
state is adjacent to the Pondicherry Union Territory? Let's move ahead further. Think about it. Tell me in the comments. Daman district has lowest sex ratio. 533 females over 1000 males. 533 females only. Why? Think about it. See, the answer lies in economics. Daman is very much famous for its industrial production. वहाँ पे काफी सारे क्लोथ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पे काफी सारा माइग्रेटेड लेबर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेट करके जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं, राइट, एंड वंस दे स्टार्ट लिविंग देयर द डेमोग्राफिक्स चेंज एंड द डेमोग्राफिक्स आर ऑब्जर्व टू बी सच दैट कि वहाँ पर विमेन कम है और मेल ज्यादा है बिकॉज माइग्रेट हो गए. जनरली इंडियन सोसाइटी में पीपल मेल गो टू वर्क at distant places, hence we observe such sex ratio. Tirchup district of Mizoram has the highest literacy rate. Okay, Mizoram is in northeast, very well known to everybody, and it has seen the highest literacy rate. So my dear friends, tell me, does literacy means that a person is very educated and highly capable enough to make better calls in life and he is very trained, very skillful? No. According to census, a person who can read or write, he has basic capabilities and understanding in regards to writing and reading, so he would be considered literate. So let's say if some place is very high in literacy, it doesn't mean that people are very educated there. They are, minimum is graduation. Everybody is graduate. People are talking in English, and see, a general standard is this, right? If people can speak in English, they are considered to be very educated. But that's not the standard. The idea is literacy cannot be compared with a highly educated society. If a society has high literacy, it doesn't mean that. So there is a chance that that society could be such wherein everybody would be graduate, everybody would be having good degrees and must be having good education qualification, but not always. Ali Rajpur, it's a tribal region in Madhya Pradesh Gujarat border. It's in Madhya Pradesh. It is having very less literacy rate. Fine, a lot of tribal population. That is one of the reasons. And see, we are trying to reach out to the tribal people, but it's taking time. And probably in this 10 years period, when we see the next census, probably this district would have performed very well. Northeast Delhi, highest density. मैंने आपको बताया ना, economics drive this. अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की, राइट, सब काफ़ी ज़्यादा है, तो पीपल लिव इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, population density is very high. Northeast Delhi. Can you tell me who was the former member of parliament from Northeast Delhi? There was this question asked in some exam recently. So the answer is Gautam Gambhir. Okay. Probably not. Northeast Delhi, I think he is from East Delhi. I'll update you in regards to the same. Let's move ahead further. But you can check. This is a very important questions asked these days because Delhi has very few constituencies and and very prominent people are getting elected from Delhi, so it becomes important. Obviously, you cannot remember all the 500 plus Lok Sabha constituency and their representatives. Dibang Valley, least density, 1 person per square kilometers, right? हमने ऊपर भी दिबांग वैली का मेंशन देखा था, least population and least density, 1 person per kilometer. You see, because resources ही नहीं है, very isolated, secluded, hence people don't live there much. चलिए आगे बढ़ते, कुछ cities के बारे में, अभी हमने districts का information देखी ना, we'll study now cities. कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी सिटी पे हमको ध्यान रखना है? मुंबई, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी. कपूरथला, लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी. क्वेश्चन आ सकता है भाई, लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कैसे? सी द आइडिया इज देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस सेट
कि किस जगह को हम सिटी बोलेंगे। तो कपूरथला डज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिटी, वेरी एक्सपांडेड, वेरी बहुत फैली हुई सिटी है, तो वो सिटी के कैटेगरी में तो आ जाती है, बट द पॉपुलेशन इज वेरी लेस, सो द लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कोझिकोड है। ओके, कोझिकोड है। If somebody from Kerala watching, please give me the correct pronunciation for Kozhikode. Probably it is different, which I am pronouncing is probably incorrect. So if you can correct me, please. Is from Kerala, has the highest sex ratio. So we had seen the highest sex ratio earlier, right? In regards to the district. So the answer is Mahe district of Pondicherry. In regards to city, it is Kozhikode. Least Bhiwandi. There we had seen least. कहाँ पे देखी थी हमने लीस्ट? वी हैड सीन लीस्ट इन दमन, राइट? मैंने बताया था आइडिया दमन में क्यों लीस्ट क्यों है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा लोग काम करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। लेट्स फर्दर मूव एट आइजवाल सिटी। आइजवाल इज इन मिजोरम, उसकी कैपिटल भी है, राइट? तो उसकी लिटरेसी हाईएस्ट है। और यहाँ हमने देखा था कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सिरचिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम हैड हाईएस्ट। यहाँ पे उसी स्टेट का, मिजोरम स्टेट की ही अनदर सिटी एजवाल, यहाँ पे सिटी है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट था सलचिप डिस्ट्रिक्ट, और एजवाल सिटी, सिटी इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। संभल उत्तर प्रदेश, लीस्ट लिटरेसी, ये सिटी जो है इसमें लीस्ट लिटरेसी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सिटी वाइज, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सेम, डिस्ट्रिक्ट भी है सिटी भी है, हेंस द करेक्ट आंसर इज दिस। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सी द आइडिया इज, अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स, जो टॉप 3 स्टेट्स है या बॉटम 3 स्टेट्स है, और जो भी रेलेवेंट उसके आसपास फैक्ट्स है वो पढ़ेंगे। फीचर्स, सॉरी, फीचर्स टॉप 3, बॉटम 3 एंड अदर फैक्ट्स। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, फाइन, पूरे इंडिया का कितना था? 1.64। ओके, मेघालय का कितना था हाईएस्ट? 2.49। अरुणाचल का कितना था? 2.3। बिहार का कितना था? 2.26। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आर इन नॉर्थ ईस्ट। Earlier they used to be very difficult. See, resource availability was less, transportation connectivity was less, healthcare facilities were less. When the government started providing better facilities, once the government started having a separate budgetary allocation for northeast region, these regions saw very good growth in regards to population. So that's how Bihar had been a state already, बहुत ज़्यादा population है, तो growth rate काफ़ी generally ज़्यादा रहता है. And I can tell you in general that population is also related to education. If some state has very high education, you can expect कि वहाँ पे population कम होगी. जैसे सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखो गोवा हैज डिसेंट एजुकेशन, गुड एजुकेशन रेट्स है वहाँ पे। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, दीज आर ऑन द बॉटम बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम देखने को मिलती है। ड्यूरिंग 2001 to 2006, as many as 25 states and union territories with a share of about 85% of the country registered population growth, annual growth rate less than 2%. So आप देखो, समझने वाली बात यह है कि 80%, 85% of the Indian region saw population less than 2%. अच्छी बात है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम ही होना चाहिए। तो आई हैव, so let's move ahead further. Now we'll see decadal growth rate, top states and the bottom states. So let's have a look into states with the highest and the lowest one. Highest मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। दो स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट से देखने को मिल रही है, एक स्टेट बिहार से देखने को मिल रही है, एक बिहार है।
बॉटम में हमको टॉप सबसे नीचे दिखता है गोवा, फाइन। उसके बाद आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओके। सिक्किम देखने मिल जाता है, ओके। अब हम डेकेडल ग्रोथ रेट देख रहे हैं। डेकेडल ग्रोथ रेट गाइस क्या होता है, पूरे डेकेड में कितना ग्रोथ रेट देखने मिला। तो हर 10 साल में इंडिया की ग्रोथ कितनी बढ़ गई, इंडिया की ग्रोथ हर 10 साल में हुई है 17.60%। As I asked you, is it good, is it bad? Tell me in comments. Let's move ahead further. अगर हम डेकेडल ग्रोथ रेट देख रहे हैं तो मेघालय, अरुणाचल, बिहार अगेन द सेम, ओके, बट हियर इट चेंजेस, ओके। थ्रू आउट द डेकेड कहां पे देखने मिला, नागालैंड में कम हो गया, माइनस में चले गया, केरला में 4.9 और गोवा में 8.2, ओके। नागालैंड में ओवरऑल 10 साल में जनरली कहीं कहीं पे बढ़ा है, पर जनरली बहुत कम हमको देखने मिला 10 साल में, दैट इज -0.5। केरला में ओनली 4.9। आई मेंशन राइट एजुकेशन एज रिलेशन टू population growth. Kerala, we know it has good literacy rates, so Kerala saw 4.9% of decadal growth rate. गोवा 8.2, गोवा में 8.2% का डेकेडल ग्रोथ देखने मिला। नागालैंड ओनली स्टेट विथ नेगेटिव रेट्स, so you can see the keyword is only, okay। 2001 से लेके 2011 तक फर्स्ट डेकेड with exception to 1911 to 21 which has actually added lesser population compared to the previous decade। so अभी हमने देखा ना 18 पॉइंट सम करोड़ हमने ऐड करे पिछले 10 साल में। ऐसा हमको सिर्फ बेसिकली आइडिया है कि इसके पहले वाला सेंसस और इस वाले सेंसस को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वाले सेंसस में 18.1 करोड़ से कम लोग ऐड हुए, सॉरी ज्यादा लोग ऐड हुए। पिछले वाले सेंसस में देयर वर अराउंड 19-20 फॉर एन एग्जांपल करोड़ पीपल एडेड टू द पॉपुलेशन, बट दिस सेंसस सॉ 18 करोड़ पीपल। एंड सेम थिंग हैपेंड इन हिस्ट्री इन 1911 टू 21 वाले सेंसस में। इसमें भी हमने क्या देखने मिला कि जो पिछला वाला सेंसस था उसमें ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी बजाय इस वाले में। व्हाट कुड बी द रीजन, बढ़ती एजुकेशन, awareness and the facilities provided by government in regards to contraceptive and others। पॉपुलेशन डेंसिटी, एक जगह पे ज्यादा लोगों का रहना, राइट। आई टोल्ड यू इकोनॉमिक रीजन। और हमको यहाँ पे ये भी देखने मिलता है कि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी रीजन नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे स्टेट की बात है ना। सी पूरा स्टेट थोड़ी ना माइग्रेट हो सकता है, पूरे स्टेट इज नॉट दैट। यहाँ पे हमको हम पास्ट में देखना पड़ेगा। इन रिगार्ड्स टू पास्ट बिहार ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड रहा है हमेशा से, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एरिया भी इतना ज्यादा नहीं है बिहार का कंपेरेटिव टू अदर स्टेट। बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, केरला ऑल्सो हैज हाई डेंसिटी, ओके। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश क्यों, एज आई सेड इट इज सेक्लूडेड, हम लोग रहते हैं वहां पे। मिजोरम भी सेम, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाओ आप, बिकॉज फॉरेस्ट लैंड काफी ज्यादा है, राइट। मैंने ये भी बताया कि प्रीवियसली वहां पे फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर रिसोर्सेज इतना इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो पॉपुलेशन पास्ट में उतनी नहीं बढ़ी है। तो अगर ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है तो उसमें ग्रोथ भी कम देखने मिलती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, नेचुरल रीजंस, जोग्राफिकल रीजन। जम्मू एंड कश्मीर सेम जोग्राफिकल रीजंस, लद्दाख एंड अदर रीजंस आर नॉट हैबिटेबल, आप वहां पे ज्यादा टाइम नहीं रह सकते और वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम देखने मिलती है, तो हिस्टोरिकली कम रही है। तो लेट्स हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग वंस अगेन। बिहार काफी ज्यादा डेंसिटी, वेस्ट बंगाल सेकंड, केरला थर्ड, लीस्ट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड जम्मू एंड कश्मीर। की पॉइंट, टॉप टू डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली एंड चेन्नई, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स वाइज है ये टॉप डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बॉटम टू में दिबांग वैली एंड सांबा, सांबा, ओके। लेट्स मूव। पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं, राइट। टोटल पॉपुलेशन 121, 0 मिलियन, दैट इज 121, 1.21 बिलियन, ओके। मेल्स
62 करोड़, फीमेल्स 58 करोड़। ओके, रूरल पॉपुलेशन, अच्छा मेल कितने भाई, 51% से थोड़े से ज्यादा, फीमेल 49% से थोड़ी सी कम। रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, 83 करोड़ से रह रही है, अर्बन एरियाज में 37 करोड़। चलो लेट्स गेट इनटू द इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज द स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश, राइट, महाराष्ट्र, बिहार, ओके, लीस्ट सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। Isn't it injustice comparing this big states with the smaller ones, right? ये यहाँ पे the idea is, अगर कोई छोटा स्टेट है, राइट, secluded है, तो उसका पॉपुलेशन ऑलरेडी कम होगी, वाइल जो स्टेट्स हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं सोसाइटी में, जैसे उत्तर प्रदेश इज हाईली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स, काफी फर्टाइल है, वाटर की अवेलेबिलिटी काफी है, रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल, हेंस हाईली पॉपुलेटेड। सेम गोज फॉर महाराष्ट्र, सेम गोज फॉर बिहार, फाइन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, टॉप 2 मेट्रोज, मुंबई, दिल्ली। मुंबई में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, दिल्ली फॉलोड बाय इट, चेन्नई ऑन थर्ड। Population of India is almost equal to the combined population of USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh, Japan put together. Interesting, right? इतनी सारी पॉपुलेशन से भी हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। Let's move ahead further. Top 2 districts, थाने एंड नॉर्थ 24 परगनास। ये बिहार वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ 24 परगनास, अगेन वेरी पॉपुलेटेड। बॉटम टू दिबांग वैली, अगेन अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। So if we talk about the participation in work, overall males का participation इंडिया, overall participation है 39%, मेल जिसमें से 45% है और फीमेल का है 14%। दैट मीन्स ओवरऑल पॉपुलेशन में से 39% जो केपेबल पीपल है वो पार्टिसिपेट करते हैं काम में, और जितने केपेबल मेन है उसमें से 45% करते हैं, जितनी केपेबल फीमेल है उनमें से 14 करते हैं। ओके, मिजोरम हैज द हाईएस्ट रेट, यहाँ पे ज्यादातर केपेबल पीपल आर एम्प्लॉयड, केरला में लीस्ट, गोवा में उससे थोड़े और कम। ट्राइब्स की बात करते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन। एनी गेसेस विच रीजन वुड हैव हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? सी, ऑन फर्स्ट नंबर 1 इज मध्य प्रदेश, ओके, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात। हाई ट्राइबल डेंसिटी, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। आई विल टेल यू द डिफरेंस। द डिफरेंस इज, मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बट ओवरऑल डिफरेंट कम्युनिटीज लिव टुगेदर, हेंस अगर पॉपुलेशन में डेंसिटी ऑफ ट्राइबल पीपल देखे तो कम हो जाती है। सेम गोज फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉलोड बाय इट, बट इन केस ऑफ मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय, दो ट्राइबल पॉपुलेशन इज कम, बट मेजोरिटी ऑफ ज्यादातर पॉपुलेशन ट्राइबल है, हेंस मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। पंजाब में 0 ट्राइबल पॉपुलेशन, हरियाणा 0, गोवा में ओनली 32,000, और लीस्ट में डेंसिटी पंजाब, हरियाणा। 550 tribes are there in our country. Important fact, 8.2% of the total population, आप एक रफ दिमाग में आइडिया रख सकते हो। 10 million population, about how much is 10 million? 1 CR, okay. States with highest area, राजस्थान ऑब्वियसली, मध्य प्रदेश सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड, गोवा छोटा सा है, सिक्किम, त्रिपुरा सेम ऑर्डर, गोवा, सिक्किम एंड त्रिपुरा। फर्दर लेट्स मूव एट अर्बनाइजेशन देखते हैं। गोवा में काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन है, एरिया छोटा है, पीपल्स आर एजुकेटेड एंड
फार्मिंग वगैरह कम होती है, ज्यादातर टूरिज्म और इस टाइप की इंडस्ट्री है. सो अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन अर्बन एरियाज. गांव वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है. मिजोरम अगेन, तमिलनाडु में भी आपको सेम चीज ऑब्जर्व करने मिलती है कि वहां पर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन. हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती है. बिहार में भी ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती है. सिर्फ 10% लोग जो है वो सिटी में रहते हैं. महाराष्ट्र इज हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज, 18 इन नंबर. महाराष्ट्र में जो सिटी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ. Assam is also very low urbanization. Let's further move ahead. Slums. 6.5 million people still live in slums. Okay, that is a sad reality. People live in very bad conditions. Maharashtra has very high number of people living in slums, followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Achha, do you see something common in these states? These states have very high uh, urbanization, at the same time a lot of industrialization. So a lot of people migrate to these states or migrate from villages of these states to the cities and live there. And obviously they are not able to afford housing and everything because that's very costly in cities. तो उनको फिर स्लम में रहना पड़ता है. अरुणाचल प्रदेश ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है, रिसोर्सेज भी इजीली, द लैंड रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल, तो लोग स्लम्स में नहीं रहते. दे आर स्प्रेडेड, देयर इज नो डेंसिटी, तो स्लम्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता. गोवा एंड सिक्किम अगेन सेम लॉजिक. गोवा में भी लोगों को स्लम्स में नहीं रहना पड़ता. लेट्स मूव इट फॉर द चाइल्ड सेक्स रेशियो. द आइडिया ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इज सच. कितने, पहले तो आप एज ग्रुप देख लो, 0 to 6, राइट. किसको हम चाइल्ड की कैटेगरी में इस सेंसस में काउंट कर रहे हैं? तो whoever is between 0 to 6 years of age is चाइल्ड बेसिकली. और चाइल्ड सेक्स रेशियो इस तरीके से है कि देर आर ओनली 914 फीमेल्स पर 1000 मेल चिल्ड्रन. मिजोरम में सबसे ज्यादा है. मिजोरम में सबसे ज्यादा है. मेघालय में उसके बाद, छत्तीसगढ़ ऑन थर्ड. If you go to northeast, you will realize that there is less disparity in regards to treatment of male and female. दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है. और there are societies which are opposite to patriarchal, they are matriarchal societies. उन सोसाइटीज में ये देखने मिलता है कि women is the head of the family, right? Unlike North India and other regions of India. मेघालय और छत्तीसगढ़. ओके, अगर आप इन सब में कॉमन कुछ देखते हो तो दैट इज ट्राइबल society. In tribal society, generally women are treated well, better. I would say well is not the right thing to say. They are treated better and they are given more responsibility and take more charge of the family. हरियाणा, obviously we know that हरियाणा में काफी previous decades में ये चीज देखने मिली है कि इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड वगैरह देखने को मिलता था, मार दिया जाता था. वैसे ही पंजाब में हमको, जम्मू एंड कश्मीर में कम देखने मिल रहा है फीमेल पॉपुलेशन. No state in India that crosses 1000 male एज ग्रुप 0 to 6. अनफॉर्चुनेटली एक भी स्टेट इंडिया में ऐसी नहीं है जहां पे 0 से 6 years की एज में women ज्यादा. अनफॉर्चुनेट. द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 आर 15 CR, 15 करोड़. चाइल्ड सेक्स रेशियो इज 914, इज लोएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस. तो ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे कम है. तो दो इंडिपेंडेंस के बाद इस वाले सेंसस में ऑब्जर्व किया गया है कि पिछले वाले सेंसस से कम पॉपुलेशन बढ़ी है, बट अगेन ये भी डिस्टर्ब हुआ है. ओके, द प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन
द proportion of child population in the age group of 0 to 6. इंडिया के केस में कितना कंट्रीब्यूशन है? ओवरऑल 13% है, मेघालय में ज्यादा है 18%, बिहार में 17% और जम्मू कश्मीर में 16%. सो बेसिकली आइडिया इज जहाँ पे पॉपुलेशन जल्दी बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, राइट, तो वहां पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, राइट. तो मेघालय में 0 से 6 साल के जो एज ग्रुप है उसका कंट्रीब्यूशन 18% है पॉपुलेशन. बिहार में 17 है, जम्मू कश्मीर में 16 है, तमिलनाडु में 9.6 है, गोवा में 9.6 है, केरला में 10 है. तो जहाँ पे हमको कम ग्रोथ रेट देखने मिल रही है वहाँ पे बच्चों की कंट्रीब्यूशन कम. पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ करंट प्राइस, तो कौन सी स्टेट कितना कंट्रीब्यूशन करती है पर कैपिटा? से आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से गोवा भी 10 करोड़ का प्रोडक्ट्स बना रही है और मध्य प्रदेश भी 10 करोड़ के प्रोडक्ट्स बना रही है, तो विच इज बेटर? गोवा इज बेटर और मध्य प्रदेश इज बेटर? विल कंसिडर गोवा एज टू बी बेटर बिकॉज वहां पे कम लोग ज्यादा सेम अमाउंट बना रहे हैं, सो द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज मोर. सो लेट्स सी कौन से स्टेट से जो पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन अच्छा दे रहे हैं. गोवा. एनी रीजन? वेरी सिंपल रीजन गाइस, टूरिज्म. अगर टूरिज्म अच्छा है तो आपका पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है. अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी फेयरली कम है तब भी आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो जीडीपी में. हरियाणा. हरियाणा में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने मिल रहा है, गुड़गांव वगैरह जैसी सिटीज आ रही है वहां पर, तो पॉपुलेशन जो है पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है. और प्लस वी नो दैट हरियाणा हैज बीन वेरी फर्टाइल, द फार्मिंग हैज बीन वेरी इफेक्टिव देयर. तमिलनाडु अगेन वेरी इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी, सॉरी स्टेट. हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज आर देयर, राइट, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल प्लांट्स आर देयर, दैट इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड डेट्रॉइट ऑफ एशिया. सम पीपल आल्सो यूज दिस टर्मिनोलॉजी. बिहार में ऑब्वियसली कम. क्यों कम? पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, फार्मिंग भी उतनी इफेक्टिव नहीं है, कभी कभी बहुत फ्लडिंग वगैरह भी हो जाती है, तो एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन वहां पर बहुत कम है, राइट. यूपी में भी सेम देखने मिलता है, बहुत सारी पॉपुलेशन. अब यूपी सीइंग ग्रोथ बिकॉज देयर आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक रीजन, समटाइम इट इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन एंश्योर गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लाइक वी ऑब्जर्व इन उत्तर प्रदेश करंटली, उससे ये होता है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनता है. सो व्हेन इन्वेस्टर कम्स इन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपन. इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, लोगों को जॉब मिलती है. सी, एक एडेड इनकम मिल जाती है. फार्मिंग तो चलती रहती है, लेट्स से आपके भी कुछ रिलेटिव्स होंगे, दे वुड बी वर्किंग इन सम कंपनी बट एट द सेम टाइम आल्सो लुकिंग टेकिंग केयर ऑफ देयर फार्म लैंड. सो पर कैपिटा इनकम तो बढ़ गई ना, तो पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन भी बढ़िया. सेम गोस फॉर झारखंड. झारखंड वी नो दो इट इज वेरी इंडस्ट्रियल, दो वहां पे माइनिंग वगैरह काफी होती है, पर वी एवरीबडी नोज दैट माइनिंग वाले सेक्टर में अ लॉट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री वेयर इन फॉर्मलाइजेशन नहीं है. कितनी पैसे दे रहे हो आप एक लेबर को, इट्स नॉट अप्रोप्रिएटली चेक्ड, सो उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम भी कम होता है. काफी दूसरे रीजंस भी होते हैं. आई एम गिविंग यू अ जनरल अंडरस्टैंडिंग टू कीप इन माइंड कि कैसे चीजें काम करती है. We are moving ahead to our last, so be patient and let's complete it. Okay. Percentage of population below poverty line. Tendulkar methodology is basically a method to understand whether the person is poor or not, right? So it is very unique in the sense that it also undertakes not just income, it is basically about basic expenditure plus some added expenditures. So that is unique about this method. We'll study in some other economic class जिसमें हम पावर्टी को अंडरस्टैंड करें. कितने लोग पावर्टी लाइन के बिलो है? अप्रोक्सीमेटली 30% पीपल. सबसे ज्यादा बिहार में लोग गरीब है, छत्तीसगढ़ में, फॉलोड बाय मणिपुर. ओके, मणिपुर अगेन व्हाई? बिकॉज आइसोलेटेड, राइट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट. गोवा वेरी हाई. क्यों? क्यों वहां पे पावर्टी कम है? टूरिज्म है, काफी लोग जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, राइट. जम्मू एंड कश्मीर, why people are not below poverty line? Again,
लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो वहां तक पहुंच पा रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर पा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी आपको सेम देखने मिलता है। आगे चलते हैं। एज स्ट्रक्चर, हमारी कंट्री में ओवरऑल 36% लोग एडोलेसेंट्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। एडल्ट्स आर 56.7 परसेंटेज, ओल्ड आर 6.8 परसेंटेज। यू सी, ये वाला जो है ना, दिस मेक्स आवर कंट्री पावरफुल। सो द आई हैड आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, राइट, कि पॉपुलेशन का ज्यादा होना इज एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जापान एंड चाइना। विल टेक टू एग्जांपल। सी, जापान is recently observing a phenomenon wherein the population of senior citizens is increasing a lot. होता क्या है, the burden of these senior citizens whom we respect a lot comes down, or it's transferred to the young generation. Moreover, this young generation of Japan is not producing more children. उनकी population decline हो रही है, plus they are observing that demographic dividend is getting disturbed. इसका मतलब डेमोग्राफी में ज्यादा बूढ़े लोग हैं बजाय जवान लोगों के। डेमोग्राफी में ज्यादा जवान लोग होना चाहिए, ज्यादा बूढ़े लोग होना चाहिए? द सिंपल आंसर इज जवान लोग, बिकॉज सी, जवान लोग काम कर पाएंगे, इकोनॉमी को आगे ले जा पाएंगे, बूढ़े लोगों की केयर कर पाएंगे। पर बूढ़े ज्यादा हो गए अगर, तो फिर जो बर्डन है वो सारा जवान लोगों पे चले जाता है, प्लस द इकोनॉमी इज ऑन द वे टू स्लो डाउन। सो जापान में ये प्रॉब्लम आपको देखने मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई जापान इज इंक्रीजिंग इंप्रूविंग इट्स वीजा पॉलिसी, बिकॉज अब वो दे आर वांटिंग यंग पीपल टू कम इनटू जापान, एंड दे आर आल्सो प्रमोटिंग देयर young generation to increase their population, to have more children. But in case of India, it is an advantage. So, demographic dividend, ठीक है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके फेवर में है तो पॉपुलेशन ज्यादा होना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट डू यू रियलाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड धीरे धीरे आपका खत्म हो जाता है, उसके डाउन साइड भी है। अगर ज्यादा यंग पॉपुलेशन है तो इकोनॉमी में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, वरना देयर इज अ चांस दैट दीज यंग पीपल वुड गो इनटू activities which you don't want them to go into. So it's important to understand that demographic dividend, unless not utilized properly, it's not very good for economy. अच्छा, लैंग्वेजेस की देख लेते हैं। 40% ऑफ द स्पीक पीपल स्पीक हिंदी, 8% सेकेंड नंबर पे बंगाली, 7% 7.8% थर्ड नंबर पे तेलुगु। कौन सी लैंग्वेज फैमिलीज? तो 73% आर इंडो यूरोपियन फैमिली। देयर इज दिस लैंग्वेज फैमिली कॉल्ड इंडो यूरोपियन फैमिली, उससे ज्यादातर लैंग्वेजेस है वो डिराइव होती है, उस फैमिली में फॉल करती है। द्रविडियन 20%, निषाद और ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस 1.3%। ये आपको देखने मिलेगी झारखंड उड़ीसा वाले रीजन। द्रविडियन साउथ इंडिया में, इंडो यूरोपियन नॉर्थ इंडिया में। चलिए आगे चलते हैं। रिलीजियन परसेंटेज, कौन सा रिलीजन कितना है? 79.8% इज हिंदुइज्म, 14% इज इस्लाम, 2.3% is Christianity, 2.08% is Sikhism, 0.8% is Buddhism, 0.45% is Jainism. Hinduism, Muslim, Christian, and Sikhs are in majority in 28421 states respectively. Hindus are in majority in 28 states. Muslims are in majority in 4 states. Christians are in majority in 2 states. Sikhs are in majority in 1 state. Can you name that state? That state is Punjab. So my dear aspirants, the lecture ends here. The idea is, this chapter is very important, as I had already told you. What is more important to prepare from now is that you give it a quick revisions repeatedly. The more you revise, the more you get success. I'll give you an example. There is a very famous UPSC topper. She shared her preparation schedule for UPSC. She mentions that
On the first day of her week, let's say she studies 2 n hours. Okay, you understand mathematics, right? 2 n hours. The next day she studies n hours and revises the previous day's study. The next day she further studies less the new things and revises more the previous thing. So the idea is more the you div, and she is the topper, right? So you must inculcate good habits. So revision is the key. This chapter has a lot of facts, so it's important to revise. Keep revising your topics. Best luck, and let's see you in the next class. I hope you are liking it. Thank you.